All right, let's dive into four huge strategic shifts happening in India right now, with all our information coming straight from UPS Crux. Now, at first, they might seem totally unrelated, but trust me, when you put them all together, they paint a really fascinating picture of where the country is headed. Okay, so what in the world do inflation numbers, fighter jets, talking bacteria, and military dogs have in common? I know, it sounds like the setup to a pretty strange joke, right? But here's the thing. Each one is a critical piece of a bigger puzzle. Let's start with the one that hits closest to home for all of us, our wallets. First up, we're looking at how India is changing the game when it comes to measuring inflation. This is a big deal because it promises to give us a way more accurate look at what's really going on with the economy. So, check out this number, 2.75%. That's the new projected retail inflation for January 2026. Now, that figure itself is pretty eye-opening, right? But the real story, the crucial part, is how we're getting to that number now. So, what's different? Well, a ton. The new Consumer Price Index, or CPI, isn't just a small update. We're talking more items in the basket, way more spending groups, and, this is key, it now pulls data from online shopping sites and thousands of markets across the country. Basically, it's finally catching up to how you and I actually spend our money today. And this isn't just numbers on a spreadsheet. It shows a huge shift in what we're spending on. You can see the new index puts less emphasis on food and a lot more on housing. Think about that. It's not just a statistical tweak. It's a mirror reflecting what's become more important in the modern Indian household budget. So what's the bottom line here? We get a much sharper, less shaky signal about what inflation is actually doing. And why should you care? Because it means the people making big economic policies have better, more realistic data to work with. Better data, hopefully, means better decisions for all of us. Okay, so from keeping our economies secure, let's switch gears to securing our borders. And believe me, the second shift we're talking about is a massive upgrade for India's defense. Just let that number sink in for a second. 3.6 lakh crore rupees. That's the value of defense proposals that just got the green light from the Defense Acquisition Council. A number that big tells you one thing loud and clear. This is a huge, huge push to modernize our military. So what does all that cash get us? We're talking about some serious hardware. 114 new Rafale jets for the Air Force, 6 PAI maritime patrol planes for the Navy, advanced high-altitude pseudo-satellites for top-notch surveillance. From the Army to the Navy to the Air Force, everyone is getting a major upgrade. And you can see the immediate impact right away, can't you? The Rafales give us a real edge in the sky, and those PAI planes are like having eyes over huge stretches of the ocean. These aren't just small tweaks, they're direct power-ups for securing our territory. But it's bigger than just that. On one hand, it sends a strong message to any potential adversaries. It's about deterrence. And on the other hand, look at things like the indigenous marine generators on that list. This is a huge win for the Atmanirbhar Bharat idea, pushing for a self-reliant India, especially in something as critical as defense. Now, when we think about strategy and defense, we usually picture jets and ships, right? Well, our next story zooms way, way in to a microscopic battlefield. We're talking about a new understanding of how bacteria communicate that could completely revolutionize medicine. The key idea here is something called quorum sensing. And honestly, the best way to think about it is like bacteria throwing a party. A single bacterium won't do much on its own, but they release these little chemical signals, and when enough of them are in one place, when the quorum is met, bam, they all act together to get something done. And this coordinated behavior can go two very different ways. Take Vibrio cholerae. It uses quorum sensing to become dangerous and make us sick. But then you have Vibrio fischeri, which uses the exact same process to glow in the dark, helping out its marine animal host. So, same tool, but used for wildly different purposes. So this leads to a huge, potentially world-changing question. We all know antibiotic resistance is a massive global threat. So what if the answer isn't a stronger weapon, but learning to speak the enemy's language? And here's the revolutionary idea. Instead of trying to kill the bacteria with stronger and stronger antibiotics, what if we just shut them up? Imagine new drugs that don't kill, but simply block their communication lines. If they can't talk to each other, they can't coordinate an attack and become harmful. I mean, that would be an absolute game changer in the fight against superbugs. All right, for our last story, we're talking about a very different kind of strategic asset. Let's meet the newest four-legged recruits joining the armed forces. And you'll see
This is about way more than just finding good dogs. So say hello to the Tongkhul Hui from Manipur and the Kambai from Tamil Nadu. The Assam Rifles are bringing these incredible Indian breeds into the fold. The Tongkhul Hui is known for being incredibly tough and resistant to disease, and the Kambai, it's just a phenomenal natural-born guard dog. And the advantages here are just stacked. First, on a practical level, these dogs are just built for the local climate. But think bigger. This reduces our reliance on foreign breeds, it perfectly aligns with that Atmanar Para Bharat policy, and it even helps protect India's own amazing biodiversity. It's a win on so many levels. So yeah, this is way more than just swapping out one dog for another. It's a move that makes our security operations stronger on the ground while also celebrating and protecting our own unique Indian heritage. It's a perfect blend of security and national pride. So think about it. We've got a smarter way to look at our economy, a much stronger military, a potential revolution in medicine, and a renewed focus on our own indigenous strengths. Each of these is a big deal on its own. But the real question to think about is, how will all these shifts, together, redefine India's future? All the insights for this breakdown came from UPS Hurux, where the goal is always to cut through the noise and get to the crux of the matter. Thanks so much for tuning in. नमस्कार और द एक्सप्लेनर के स्पेशल करंट अफेयर्स चैलेंज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अगले कुछ ही मिनट्स में टेस्ट करते हैं आपकी नॉलेज फरवरी 2026 के कुछ ज़रूरी सवालों पर। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, चैलेंज शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल आ रहा है सीधे देश की इकोनॉमी से। देखते हैं इस मामले में आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। सवाल नंबर 1 आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ। लेट्स सी। ओके, तो सवाल है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई, जिसके जरिए हम महंगाई को नापते हैं, उसका नया बेस ईयर कौन सा है? याद रखिए, इसी नए बेस ईयर के हिसाब से जनवरी 2026 में रिटेल इन्फ्लेशन 2.75% बताया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए 2012, बी 2020, सी 2023 या फिर डी 2024। सोचने के लिए आपके पास 5 सेकंड हैं और सही जवाब है ऑप्शन डी 2024। अगर आपका जवाब यही था तो क्या बात है, बिल्कुल सही। तो देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने महंगाई को कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर था उसे 2012 से बदलकर अब 2024 कर दिया है। अब ये बेस ईयर एक रेफरेंस पॉइंट जैसा होता है। इसे अपडेट करने से सीपीआई अब ज्यादा एक्यूरेटली बताता है कि लोग आजकल अपना पैसा कहां और कैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं है, बल्कि इकोनॉमी को देखने के नजरिए का बदलाव है। चलिए इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। ये सवाल एक बहुत बड़ी डिफेंस डील से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है, हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने 6 P-8I विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। ये विमान भारतीय सशस्त्र बलों की किस ब्रांच को मिलेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ए इंडियन आर्मी, बी इंडियन एयरफोर्स, सी इंडियन नेवी या फिर डी इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या लगता है आपको? सोच लीजिए। टाइम्स अप और इसका करेक्ट आंसर है सी, द इंडियन नेवी। बहुत बढ़िया। देखिए, ये जो 6 P-8 एयरक्राफ्ट हैं, ये इंडियन नेवी के लिए एक रियल गेम चेंजर हैं, क्योंकि ये एडवांस्ड मैरिटाइम पेट्रोल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर विमान हैं। इनके आने से इंडियन ओशन रीजन में हमारी निगरानी करने की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी और समुद्री सुरक्षा को एक जबरदस्त मजबूती मिलेगी। ठीक है, अब डिफेंस से थोड़ा हटकर साइंस की एक दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। ये सवाल माइक्रोबायोलॉजी से है, सो गेट रेडी। सवाल ये है, बैक्टीरिया अपनी आबादी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं और अपने बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करते हैं। इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को आखिर कहते क्या है? ऑप्शंस थोड़े टेक्निकल हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ए बायोलुमिनेसेंस, बी क्वोरम सेंसिंग, सी फोटोसिंथेसिस या डी फैगोसाइटोसिस। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका बिल्कुल सही जवाब है बी, क्वोरम सेंसिंग। ब्रिलियंट। तो क्वोरम सेंसिंग आसान शब्दों में बैक्टीरिया का अपना सोशल नेटवर्क है। इसके जरिए वो केमिकल सिग्नल्स भेजकर एक दूसरे से बात करते हैं और जब उनकी पॉपुलेशन एक खास लेवल यानी क्वोरम तक पहुंच जाती है, तब वो सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन को तेजी से फैलाना। मेडिकल साइंस अब इस कम्युनिकेशन को ही रोकने के तरीके ढूंढ रही है, जो एंटीबायोटिक्स का एक कमाल का अल्टरनेटिव हो सकता है। चलिए अब हम अपने आखिरी सवाल पर आ गए हैं। ये सवाल सुरक्षा और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को एक साथ जोड़ता है। इंटरेस्टिंग है। सवाल है,
असम राइफल्स अपने स्क्वाड में स्वदेशी यानी इंडियन डॉग ब्रीड्स को शामिल कर रही है। इनमें से एक ब्रीड का नाम है तंगखुल हुई। आपको बस ये बताना है कि ये नस्ल मूल रूप से किस भारतीय राज्य की है। ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी असम, सी मणिपुर या डी नागालैंड। ये आखिरी सवाल है, तो आराम से सोचिए और जवाब दीजिए। और इस चैलेंज का आखिरी सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। जिन्होंने भी सही जवाब दिया उन्हें बहुत बहुत बधाई। तो ये जो टंगखुल हुई ब्रीड है, ये मणिपुर की एक खास नस्ल है। इसका असम राइफल्स में शामिल होना होम मिनिस्ट्री के 2025 के एक निर्देश का हिस्सा है। इस पूरी पॉलिसी का मकसद ये है कि इंडियन डॉग ब्रीड्स को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये नस्लें यहाँ के मौसम और माहौल के लिए ज्यादा बेहतर होती हैं। क्विज यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन एक आखिरी जरूरी जानकारी अभी बाकी है। चलिए अपने पहले सवाल यानी सीपीआई पर वापस चलते हैं और इसके एक और पहलू को थोड़ा गहराई से समझते हैं। नए सीपीआई में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है फूड कैटेगरी के वेटेज यानी उसके महत्व में। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2012 के बेस में फूड का वेटेज लगभग 46% था, जो अब 2024 के बेस में घटकर लगभग 37% हो गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि पिछले दशक में हम सब भारतीय परिवारों के खर्च करने के पैटर्न में कितना बड़ा बदलाव आया है। और यहीं हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि लोग अब खाने पीने पर पहले से कम खर्च कर रहे हैं, तो इससे देश की आर्थिक नीतियों यानी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग पर क्या असर पड़ता है, इस पर जरूर सोचिए। द एक्सप्लेनर देखने के लिए शुक्रिया। कीप लर्निंग।